Hello and welcome. It's the fourth day of the ICC Champions Trophy. You're watching Sunsilk presents Nukta Pitchside, powered by Skechers. You're watching us on all the Nukta platforms, Sports Eye and Sports Play. Thank you so much for being with us. I hope you've enjoyed, or rather have been enjoying, our transmission before every match and after every match. तीन मैच जो खेले जा चुके हैं अब तक. The first one was between the host nation Pakistan, which they lost to New Zealand. We here pretty much in Karachi. उसके बाद दूसरा मैच खेला गया between India and Bangladesh. जो इंडिया ने एक बड़े comfortably 6 विकेटों से वो मैच जीता. और उसके बाद कल का मैच था between Afghanistan and South Africa, also being played in Karachi. और वो मैच जो है South Africa ने 107 रन से जीता. Today is the fourth day and historic rivals, I would like to call them, जिनकी 148 years की history है क्रिकेट खेलने की, उनका मुकाबला होने जा रहा है. एंड मज़े की बात यह है कि दोनों जो हैं जिस फॉर्म लेकर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, उसको लेकर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है जो अच्छी फॉर्म नहीं है. लेकिन ऑफ कोर्स दोनों टीमें जो हैं उनके पास बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं. अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करते हैं तो ये याद रहे कि बिटवीन द बैटिंग लाइनअप जो उनके बैटर्स हैं, दे हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 330 मैचेस बिटवीन देम. लेकिन जो बॉलिंग यूनिट है उनका काफ़ी नया है. काफ़ी उनको शॉक्स का सामना करना पड़ा है क्योंकि वो एकदम से जो उनके तीन मेन बॉलर्स हैं वो इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे. सो दे ओनली हैव 37 मैचेस बिटवीन देम. अगर इंग्लैंड की बात करते हैं तो 2023 के वर्ल्ड कप के बाद सारी बायलैटरल सीरीज़ वो हारे हैं. अगर हम ओवरऑल प्लेयर्स की भी बात करते हैं, जॉस बटलर खुद बहुत टाइम के बाद जो है इस टीम का हिस्सा बन रहे हैं. जो रूट जो है वो इस टीम का हिस्सा बहुत टाइम के बाद बन रहे हैं और वो भी एक अच्छी फॉर्म लेते हुए नहीं आ रहे इस टूर्नामेंट के अंदर. लेकिन all is well when these two teams meet and हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक fierce rivalry होगी आज के मैच के अंदर. एक अच्छा मैच हमें ज़रूर देखने को मिलेगा. तो let's start our pre-match lowdown and उसके साथ क्या कहते हैं, let's have a quick bumper on our screen. तो प्री मैच लॉकडाउन में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुक्ता के स्पोर्ट्स एडिटर खालिद हुसैन, हमारे हर दिल अजीज़ हमारे एनालिस्ट. कैसे खालिद भाई, आप ठीक हैं? या गेटिंग बेटर एवरी डे. नहीं, आपको तो देख के हम सीख रहे हैं. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द चैंपियंस ट्रॉफी. एक्सीलेंट. आई थिंक पहला मैच बड़ा अच्छा मैच था, ऑल्दो होम फैंस के लिए वो एक मैच अच्छा नहीं रहा होगा. लेकिन द वे न्यूजीलैंड प्लेड, फिर हमने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश की जो थी एक बिल्कुल गिव अप नहीं किया डिस्पाइट बीइंग 35 for 5. और फिर कल के मैच में साउथ अफ्रीका ने क्लिनिकली जिस तरह से वो मैच खेला गिवन द कंडीशंस, तो बड़ी अच्छी स्टोरी लाइंस निकल रही हैं, बड़े अच्छे में परफॉर्मेंसेस नज़र आ रहे हैं सो फार. और अब तक आई थिंक 5 सेंचुरीज भी हो गई हैं इस टूर्नामेंट में. यस, वेरी एक्सपेक्टेड. लाइक एशियन विकेट्स पे पाकिस्तानी और यूएई विकेट्स पे रन्स तो होने ही थे, लाइक यू नो. और आज जो लाहौर की विकेट है वो तो और भी ज़्यादा फ्लैट होती है और यू नो मौसम भी वहाँ बेहतर होगा. तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड टोटल फ्रॉम बोथ द साइड्स. बिल्कुल ठीक है. और हमें एक और बड़े स्पेशल मेहमान जो हैं ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड हमें ज्वाइन कर रहे हैं. यूँ तो उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है, लेकिन अगर हम बात करते हैं वी कैन प्रीटी मच से दैट ही इज़ सिनोनिमस विद पाकिस्तानी क्रिकेट. और इनकी जर्नी बड़ी ज़बरदस्त रही है पाकिस्तान क्रिकेट से जब से PSL भी स्टार्ट हुआ है. और हमारे साथ मौजूद हैं एलन विल्किंस. एलन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम वेयर यू जॉइनिंग अस. थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. हाउ आर यू? Morning, Altamish, and to you, Khalid. I'm very well. I'm very much looking forward to this encounter. You've got two heavyweights here who are slightly uncertain of each other and slightly uncertain of themselves because they feel they've got a lot to prove, and both these teams are coming off losses. You know, England lost heavily in India, and Australia came unstuck in Sri Lanka. So I really think you've got two heavyweight boxers who don't quite know what punches to throw. I really like that analogy over there, Alan. But before we actually get into the analysis of the pre-match between these two teams, what I would like to ask you is about your journey with the Pakistan cricket. You've been part of it since 2016, covering the PSL, which is happening in Dubai. At that time, the board tried really hard. The country tried hard for cricket to come back to Pakistan, and you saw the whole thing now over the consecutive PSLs, and finally the one final happened, and then a few matches happened, and now we're seeing an entire Champions Trophy being played out here, barring a few matches, of course, in Dubai. How do you feel about this, about cricket coming to Pakistan and such a big event happening here after so many years? Well, I think it's payback time for Pakistan, who've played their cricket for 10 years and more in the United Arab Emirates. I think it's payback time for the players, the administrators, and for the fans. You know, there's some great stadiums. The PCB has worked hard to get Karachi and Lahore, Islamabad ready for this tournament. When I got to Pakistan eventually, I was absolutely astonished with you know
the feeling inside the stadiums just for PSL matches. I mean, the PSL grabbed Pakistan in such a way that the IPL did with its neighbours, right? And we've seen that, as the Big Bash did in Australia. PSL has been a very important catalyst for the uprising, if you like, of cricket in Pakistan. But to be part of that, Altamish, was a privilege. It was wonderful to launch the PSL in 2016 in Dubai, but the difference then to going into Pakistan was quite breathtaking. It really was. Yes, we had security, extra security, and there were a few issues, but I never felt unsafe. I always felt good traveling in Pakistan, and the welcome from the fans. You see, that's the important barometer. It's the welcome you get from the local people, which was astonishing. And long may this journey continue. I think for Pakistan to host this tournament, even though they got off on the wrong foot in the opening match, that was a big blow. I think it's wonderful for Pakistan cricket. Absolutely, and so far we've had 2 matches here, and today is the 3rd one in Lahore, and we're already hearing news of the stadium being completely sold out. In fact, people are now actually looking for tickets on the market, which they shouldn't be looking at. Khalid bhai, आप बताएं, अब तक बड़ा अच्छा एक स्मूथ टूर्नामेंट गुजरा है और कोई ऐसी खबरें नहीं आई हैं, प्लेयर्स खुश हैं, फैसिलिटीज़ बड़ी टॉप नॉच हैं, हर चीज़ अभी तक बड़ी अच्छी जा रही है। या देखो ना, चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए हमने इतना इंतज़ार किया कि कोई आईसीसी का टूर्नामेंट आए, एंड पाकिस्तान इज़ प्रिपेयर्ड वेल फॉर इट। अनफॉर्चुनेटली देयर हैव बीन अ लिटिल sort of छोटी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, बट थैंकफुली कोई मेजर चीज़ नहीं हुई, एंड होपफुली होगी भी नहीं, एंड द टूर्नामेंट इज़ प्रोग्रेसिंग रियली वेल। All the cricket fans, you know, anybody who's connected to cricket must be delighted. I'm sure, like just like Alan said, it's a big deal for Pakistan, like, you know, and it's not just ICC का जो tournament है, Champions Trophy, is not just a Pakistan का tournament. It's the world cricket का tournament, you know. So everybody has to be there, support it, back it, और वो हो रहा है थैंकफुली। यस, बिल्कुल ठीक है। एक थोड़ी सी आईसीसी को कंप्लेन गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दैट्स व्हाई आई सेड कि कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं। देखो, फ्रिक्शन तो है सिंस द वेरी स्टार्ट, द वे इंडिया एक्टेड, दे डिडंट सेंड द टीम टू पाकिस्तान व्हिच वाज इन बैड टेस्ट। खैर, वो रिजॉल्व हो गया, आप यूएई में खेल रहे हैं। फिर वो छोटी सी फ्लैग की कंट्रोवर्सी यहाँ पर हुई, लोगों से पाकिस्तान का नाम कैसे ओमिट हो गया, मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। कौन से वो टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से आप एक पूरे मैच में एक होस्ट कंट्री का नाम हटा सकते हैं? तो ऑब्वियसली पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। लाइक इंडिया पाकिस्तान प्लेइंग रेगुलर क्रिकेट without any incidents is huge for international cricket, you know, for the world game. आप वो कम से कम कर चुके हैं ऑलरेडी, और आप सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेलते हैं आपस में, और उसमें भी अगर इस तरह की फ्रिक्शन होगी तो इट्स डजंट ऑगर वेल फॉर द स्पोर्ट इटसेल्फ। तो दिस इज़ समथिंग द अथॉरिटीज शुड लुक इनटू। वो देखें कि ये क्यों हो रहा है। यू नो, ऑब्वियसली फैंस गेट डिसअपॉइंटेड, दे वांट टू सी प्लेयर्स लाइक विराट कोहली एंड यू नो रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह इन प्लेइंग एट गद्दाफी और द नेशनल स्टेडियम। होना चाहिए। वैसे हमारे भी द बाबर आजम एंड द शाहीन आफरीदीज़, उनको जाके मुंबई में वानखेड़े में खेलें, दिल्ली में खेलें, यू नो, अहमदाबाद में खेलें, ये रेगुलर होना चाहिए। बट इस तरह के इंसिडेंट्स अगर होते रहेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि आप एक स्टेप आगे लेते हैं एंड देन 2 स्टेप्स पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, जब हिस्टोरिक राइवलरीज की बात करें, आज का मैच भी जो है बड़ा एक हिस्टोरिक, ये तो ओरिजिनल राइवलरी है क्रिकेट की। ओरिजिनल राइवलरी, इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी सबसे बिगेस्ट राइवलरी होगी क्रिकेट की, बट दिस इज द ओरिजिनल राइवलरी ऑफ क्रिकेट, यू नो, स्टार्टिंग वे बैक इन द, यू नो, 19th century, आई थिंक। So yes, it's an exciting game. इस जो ये फिक्सचर है, पहला फिक्सचर इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो 148 ईयर्स पहले खेला गया था, और बड़ा मज़ा आता है जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं। कोई भी फॉर्मेट हो, स्पेशली अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो मज़ा ये और होता है। बट आज का मैच बड़ा एक बॉक्स ऑफिस मैच होने वाला है लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। जैसे मैंने पहले कहा, ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो स्टेडियम है कम्प्लीटली सोल्ड आउट है, और फैंस जो है कोशिश करें कहीं ना किसी तरीके से जो है इस मैच को लाइव जाके देख सकें। बट ऑन दैट नोट हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक से आके जो है इन दोनों टीमों के जो हेड टू हेड अब तक फिक्सचर्स हो चुके हैं, रिजल्ट्स, उनके प्लेयर्स। इंग्लैंड बहुत कॉन्फिडेंट है, they've already announced they're playing 11 2 days prior to this match. We'll ask Alan, where is this confidence coming from, given the fact that ODIs they haven't been that well in the recent past. So let's go for a quick break, और break से आगे फिर further discussion carry on करेंगे। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल,
सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन all the time with Sunsilk Black Shine. And Harry Kane scores another goal. Is there anything Harry can't do since switching to new Skechers football boots? Checkmate. Incredible. That's impressive. This guy can do anything in Skechers. New Skechers football. It's comfort that performs. बचपन से कारोबार का शौक। स्पोर्टर की उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। 2020 में इंटरलूप ने 33 बिलियन रुपीस की एक्सपोर्ट्स की। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन all the time with Sunsilk Black Shine. Introducing Skechers Pickleball. They're ultra lightweight and responsive for incredible speed. They have Goodyear rubber outsoles with a specialized pickleball design for increased side-to-side stability and agility. Conquer the court in comfort. Skechers Pickleball, the official footwear of every pickleball league. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते थोड़ी रिकवरी नजर आई और जनवरी 2025 में रेमिटेंसेस $3 बिलियन रही। Liquidity, obviously that doesn't come in immediately. और अब इस हफ्ते के टॉप 5 गेनर्स। पॉलिसी रेट हायर है 15% पे। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन all the time with Sunsilk Black Shine. You're seeing Skechers' famous glide step footwear everywhere. And now that famous design is available in hands-free Skechers slip-ins. Get the comfort and style of glide step now with the convenience of slip-ins with no bending down or touching your shoes. Try glide step Skechers slip-ins. क्या करना है to make your money work for you? बचपन से कारोबार का शौक। स्पोर्टर की उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। 2020 में इंटरलूप ने 33 बिलियन रुपीस की एक्सपोर्ट्स की। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन all the time with Sunsilk Black Shine. Get the whole story. Nukta, the whole story. Download the app now. And Harry Kane scores another goal. Is there anything Harry can't do since switching to new Skechers football boots? Checkmate. Incredible. That's impressive. This guy can do anything in Skechers. New Skechers football. It's comfort that performs. क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन।
बाल करें shine all the time with Sunsilk Black Shine. Thank you for being with us. You're watching Sunsilk presents Nukta Pitchside, powered by Skechers. You're watching us live on all the Nukta platforms, Sports Eye and Sports Play. Studio में मेरे साथ मौजूद हैं खालिद भाई और हमें इंग्लैंड से ज्वाइन कर रहे हैं एलन भाई. Alan, coming straight to you. We'll first talk about England, and the recent past form in the ODIs hasn't been good, like you mentioned yourself as well in the previous segment. If you look at the head-to-heads or the matches, the number of matches they played since the ODI World Cup, coming into this, they've pretty much lost everything. And there's a lot of talk about England not taking ODI cricket very seriously. How do you see this, and why is that the case? A couple of factors there, Altamish. England and the top England players, the likes of Salt, Duckett, Root, Brooke, they don't play enough 50-over cricket in their home country, in England. That is an absolute fact. There is one 50-over tournament called the Metro Bank One Day Cup, and it's not played by the senior players. You'd have to look at this England lineup that's playing today, and England have named their side. I would venture to say that maybe 1-2 of them play in this domestic 50-over tournament, which is really ridiculous when you know that you've got a Champions Trophy taking place now, which is a 50-over tournament. So heaven knows why these top England players do not play enough 50-over cricket. That now manifests itself into a team which is full of uncertainty. My problem with this England team is that, yes, they have a load of T20 specialists. They can smash the ball out of any stadium in the world, but can they play the longer format? It requires a completely different mindset. And that's why I think this England team struggles. I think it struggles with a mindset that has to adapt to 50-over cricket. If you don't drive your car regularly, how can you drive it on a motorway for 100 miles? You've got to be used to the car. This England team is not used to playing 50-over cricket. It's as simple as that. Absolutely. And Alan, one more thing I would like to ask you. You mentioned the players. Also on an institution level, if you look at the ECB, the List A has now been demoted into a second tier tournament. How do you see that as well? Well, it's a double-edged sword for me, Altamish, because my home county, Glamorgan, where I'm president and where Javed Miandad played and Majid Khan was our captain many years ago. But we have won that trophy. We won it last year and we won it 3 years ago before that. So we're pleased because this trophy does give younger players, squad players, a chance to show their skills. So it's a double-edged sword. But if you're an England selector, and you make a very good point, why do you demote the trophy? Why don't you make the trophy a 50-over tournament the pinnacle? We have an ODI World Cup, Australia are champions. We have a Champions Trophy, 50 overs. So why would you domestically demote the currency, if you like? Why would you do that? I don't understand the thinking of the ECB in this case. I have no idea why they've done it. Perfect. Khalid bhai, क्या कहेंगे इस बारे में आप? Altamish, I think talking about England, मुझे ये लगता है कि they've decided कि the real glory जो क्रिकेट की है वो है टेस्ट क्रिकेट में, तो they go for it, and the real money in cricket is in T20. तो बेचारा जो बीच में ODI क्रिकेट 50 ओवर फॉर्मेट है वो प्लेयर्स के लिए भी और थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी अनइम्पॉर्टेंट कम इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि T20 में भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप पिछला जो वर्ल्ड कप देखें, देखो टीम्स के अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि ये दोनों टीमें ऑब्वियसली 4-4 लॉसेस के बाद इस मैच में आ रही हैं। इनकी करंट फॉर्म बुरी है, बट इंग्लैंड 2019 का ODI का चैम्पियन है, वर्ल्ड चैम्पियन, और ऑस्ट्रेलिया 2023 का वर्ल्ड चैम्पियन है। तो इट्स नॉट दैट फार कि ये टीमें अच्छी थीं ODI में भी। तो आई डोंट सी कि ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। आई थिंक ये शॉर्ट टर्म उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आई थिंक एशेस जीतना है तो वो फोकस सारा उस पर चला जाता है। T20s में ऑब्वियसली प्लेयर्स का फोकस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज IPL गिव्स देम मिलियंस ऑफ डॉलर्स। फिर उसके बाद PSL है, बांग्लादेश लीग है, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, दे आर लाइक डजन्स ऑफ लीग्स नाउ वर्ल्ड क्रिकेट में। तो ऑब्वियसली द प्लेयर्स आर फोकसिंग, उनकी जो फिटनेस है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो
is all aimed at T20 cricket. और जो अच्छे वाले players हैं, जो आपके top tier players हैं, जैसे जो रूट हो गए, ये सब जो हैं ये टेस्ट में ज़्यादा फोकस है, because they want to make their records in test cricket, because they think that's where the real glory or cricketing glory lies in, So I would say कि ODI में obviously सब teams का थोड़ा बहुत एशियन टीम्स अभी भी 50 ओवर फॉर्मेट पे अभी भी सीरियस हैं, बट आई वुड से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कम फोकस्ड है. ये नहीं है कि बिल्कुल फोकस नहीं है. दे नो कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी आता है, चैंपियंस ट्रॉफी भी आती है जो 50 ओवर वाले होते हैं. तो आई थिंक कि ऐसा नहीं है कि ये टीमें बिल्कुल छोड़ देंगी ODI फॉर्मेट को. जब तक ये फॉर्मेट है, जब तक अलाइव है, मे बी इन द लॉन्ग रन 10-15 ईयर्स फ्रॉम नाउ वी माइट नॉट सी 50 ओवर क्रिकेट, बट जब तक है ये टीम्स करेंगी, कम करेंगी. इनका फोकस ये रहेगा कि टेस्ट, T20 एंड देन तीसरे नंबर पे ODI. ठीक है. और ब्रेंडन मैकलम जो है, अब उनको अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स जो है वो कोच बहुत कम टाइम दिया है उनको वाइट बॉल क्रिकेट के लिए. 1 महीना आई थिंक कुछ मिला है उनको. देखो, मैकलम ने बहुत अच्छा टर्न अराउंड कराया था इनका रेड बॉल क्रिकेट में, एज वी सॉ. इंग्लैंड रियली प्लेड वेल. वो जो बेस बॉल भी था, तो आई थिंक इतनी जल्दी टर्न अराउंड कराना उनके लिए पॉसिबल होगा या नहीं, विल सी. बट आई थिंक आई हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इंग्लैंड टीम एज वेल, बिकॉज दे हैव सम वेरी गुड प्लेयर्स. और स्पेशली जो पाकिस्तान की विकेट्स पे द वे दे प्लेड, PSL वगैरह खेली है उन्होंने. हैरी ब्रुक को देखें आप, पाकिस्तान में रन्स करने से रुकते ही नहीं है वो. ऐसा लगता है कि उनका फेवरेट हंटिंग ग्राउंड ही पाकिस्तान है. तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि हम जब उनको उनके मतलब की पिच मिल जाए, क्योंकि हमने टेस्ट में देखा था सेकंड एंड थर्ड टेस्ट के अंदर. यही सवाल मैं चाहूंगा कि मैं नहीं, वैसी विकेट आपको इधर गद्दाफी में नहीं मिलेगी. बिल्कुल सही है. Alan, like I asked Khalid right now, what do you make of Brendan McCullum being given the coaching role for across the 3 formats? I think it makes sense because the last, say, 15-20 years, England have toyed with different coaches. It leads to uncertainty. I don't think it's a bad thing, Altamish. I think if in the minds of the England hierarchy or the management, they feel that this is the way to go. Look, Brendan McCullum is very well respected globally. He's respected in the England setup. So why not give him a try? Why not say, okay, let's see how it goes for a year or 2, or say 2 years. At least then you can say you've tried it. If he feels the weight of the burden on his shoulders is too much, because there's a heck of a lot of cricket being played. And by the way, Khalid makes a very good point there about the currency, if you like, of the modern cricketer. They go off to play in all these leagues. They are making a lot of money, and it's at the expense of a 50 over tournament like Champions League, or like the ODI World Cup, or even like Test cricket. So the ICC and the governing boards, the BCCI, the PCB, the ECB have all got a job to do to look after the longer form of the game, 50 over and Test cricket. But that's for another discussion. But a very good point made by Khalid. This, for Brendan McCullum, I think it leads to players being more certain about their role, about their place, and in a bizarre way, it might just lead to some players pledging their allegiance to the country. For instance, if I just watched Tom Banton in the ILT20 in the UAE, where Azam Khan was playing, where Mohammad Amir was playing, where Fakhar Zaman was playing, some terrific cricketers there. And Tom Banton, I mentioned to Baz McCullum, he's playing absolutely magnificently. I told Brendan, you've got to look at this guy. He said he's on our radar, and not just that, he's on standby, and he's now in Pakistan. I'm slightly disappointed he's not in this England team today, but the point I'm making is, if you've got Brendan McCullum and he's across the T20, he's across the ODI, and he's across Test cricket, I think that leads to a continuity. Now, whether he can sustain it and have the energy, that's another question. But I think he's young enough to do the job, and I like the fact that he's got all 3. That's right, and he brings with him a lot of confidence, and he instills a lot of confidence wherever he goes, and we can see that with England announcing they're playing 11 2 days prior to the match. Very unusual for England to do that, but I think they have, obviously, it's all part of the way that Brendan McCullum
has always played his cricket. He has always been a very positive fellow in any walk of life. Whatever he does, he's a horse owner as well. You know, he breeds horses, so he's very confident about his horses winning races. But this England side, yes, I think it almost picks itself. There's a question mark about Jamie Smith going at 3, so they put Jamie Smith at 3, which means that Root, Brooke, Butler, Livingston batting at 7. Liam Livingston, they've come down the order. There is competition there. I mentioned Tom Banton, wonderful player. He can go in there. My query about this England side, I think Adil Rashid is an absolute, he's the one bowler who's got to perform for England today. Then they have a problem with their spin, their backup. Yeah. Because you've got to get overs out of Joe Root and Liam Livingston. When you look at the Australians, Adam Zampa leads by example, and they've got better backup than England. But this is an England side that bats very deep. But a big focus today, Altamish, on Josh Buttler, because Josh Buttler missed every ODI last year for England, and he's been carrying a calf injury, so he's not played for a year, and there's a focus of attention on Josh Buttler. When you look at each of these players, they look like world match beaters, but they've played a lot of T20 cricket, and they were beaten heavily in India. So I think there is a question mark. Do you think we talk a lot about momentum in cricket? With the momentum England is bringing into this tournament, do you think that will have an effect? Or you see that it's again, with so much experience under them, it's a thing of the past, it's a new tournament they are in, and that won't make a difference, whatever form they've been carrying so far into this tournament? Well, the management will tell you that what has gone, and that's history. But you can't discount it. You know, you remember, Altamish, you remember the last series that you would have worked on. And if it was a good series to work on, whether you had a good time presenting the program, everyone's got a memory for the good things in life, and everyone's got a memory for the bad things in life. So, you know, there will be a question on Harry Brook has not provided the runs. He's a fantastic cricketer. He loves Pakistan. He got a test average of 84 in Pakistan, and, you know, he's got a 100 there. So I don't discount the fact that, you know, that the past or the recent history doesn't come into it. I think it does, but as a professional sports person, you have to be able to draw the line and then start again. If you like, turn over the page and start writing new data, new stats, fresh ground. So there is that in it. But at the back of your mind, surely, if you're short of runs or if you're short of wickets, that little niggling feeling that you're not performing, and it will be in the minds of some of these cricketers. That's right. And we have to go to break, Alan, but before that, you spoke about the bowling, the English bowling unit for this match. We're going to be seeing Mark Wood and Jofra Archer together since 2022 for the first time. How do you see that? Yes, you did mention a little bit of definitely a bother with the spin department and getting through those 50 overs. Well, you've got two of the quickest bowlers in the tournament right here. Archer, yeah, we know how quick he is, and we know Mark Wood is quick, but I'd like to see, I'm not sure how fast this surface will be in Lahore today, but they are absolutely key bowlers. And also, you've got young Bryden Carse, who has been such a revelation for England as almost a backup, a safety backup. He's quick, but he also shores up runs. The only problem with pace, when you've got pace like Archer and Mark Wood, is that the ball can fly. The ball can fly, and if those boundaries are a little bit short, backward of third and back leg side, they could be costly. So line length, almost old-fashioned bowling has to be the key for England today. Great stuff. Well, now we have to go for a very short break. Soon there will be the toss at the Gaddafi Stadium, an all-important one. Let's see who wins and what they decide to do. Do stay with us. We're going for a short break. You're watching Sunsilk Presents Nukta Pitchside, powered by Skechers. We'll discuss the toss and the playing 11s once we come back. क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स।
जो दे आपके बालों को up to 24 hours shine. अब बाल करें shine all the time with Sunsilk Black Shine. And Harry Kane scores another goal. Is there anything Harry can't do since switching to new Skechers football boots? Checkmate. Incredible! That's impressive. This guy can do anything in Skechers. New Skechers football. It's comfort that performs. बचपन से कारोबार का शौक। स्पोर्टर की उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। 2020 में इंटरलूप ने 33 बिलियन रुपीस की एक्सपोर्ट्स की। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। Introducing Skechers Pickleball. They're ultra lightweight and responsive for incredible speed. They have Goodyear rubber outsoles with a specialized pickleball design for increased side-to-side stability and agility. Conquer the court in comfort. Skechers Pickleball, the official footwear of every pickleball league. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सबसे थोड़ी रिकवरी नजर आई और जनवरी 2025 में रेमिटेंसेस $3 बिलियन रही। Liquidity, obviously that doesn't come in immediately. और अब इस हफ्ते के टॉप 5 गेनर्स। पॉलिसी रेट हायर है 15% पे। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम with Sunsilk Black Shine. You're seeing Skechers' famous glide step footwear everywhere. And now that famous design is available in hands-free Skechers slip-ins. Get the comfort and style of glide step now with the convenience of slip-ins with no bending down or touching your shoes. Try glide step Skechers slip-ins. क्या करना है to make your money work for you? बचपन से कारोबार का शौक। स्पोर्टर की उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। 2020 में इंटरलूप ने 33 बिलियन रुपीस की एक्सपोर्ट्स की। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। Get the whole story. Nukta, the whole story. Download the app now. And Harry Kane scores another goal. Is there anything Harry can't do since switching to new Skechers football boots? Checkmate. Incredible! That's impressive. This guy can do anything in Skechers. New Skechers football. It's comfort that performs. क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम
with Sunsilk Black Shine. क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? Sunsilk Black Shine में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम with Sunsilk Black Shine. And Harry Kane scores another goal. Is there anything Harry can't do since switching to new Skechers football boots? Checkmate. Incredible! That's impressive. This guy can do anything in Skechers. New Skechers football. It's comfort that performs. बचपन से कारोबार का शौक। स्पोर्टर की उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। 2020 में इंटरलूप ने 33 बिलियन रुपीस की एक्सपोर्ट्स की। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? Sunsilk Black Shine में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम with Sunsilk Black Shine. Introducing Skechers Pickleball. They're ultra lightweight and responsive for incredible speed. They have Goodyear rubber outsoles with a specialized pickleball design for increased side-to-side stability and agility. Conquer the court in comfort. Skechers Pickleball, the official footwear of every pickleball league. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सबसे थोड़ी रिकवरी नजर आई और जनवरी 2025 में रेमिटेंसेस $3 बिलियन रही। Liquidity, obviously that doesn't come in immediately. और अब इस हफ्ते के टॉप 5 गेनर्स। पॉलिसी रेट हायर है 15% पे। Break it back. Khushamdeed. Thank you for staying with us. You're watching Sunsilk presents Nukta Pitchside, powered by Skechers. You're watching us live on all the Nukta platforms, Sports Eye and Sports Play. The news from Gaddafi Stadium is that the Australian captain Stephen Smith has won the toss and decided to bowl first. And I think it's a fairly good batting track, and they would like to take advantage of the dew which they have been seeing over the past few days, because Australia has been here for a few days now और काफ़ी उनकी practices हो चुकी हैं at the Gaddafi Stadium. और उन्हीं के जो इंग्लैंड के कैप्टन थे, he was 50-50 and he said कि शायद वो भी बैट ही करना चाह रहे थे, but again not too sure about that. And उनकी तो already playing 11 जो है वो पहले ही बता चुके थे इंग्लैंड की टीम 2 दिन पहले। ऑस्ट्रेलिया ने जो है बड़ी अच्छी तरीके से स्टीवन स्मिथ ने तमाम उनको 11 नाम याद थे, उन्होंने बताए, शायद हमें याद नहीं होंगे, वो हम जरा आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाएंगे। एंड फॉर श्योर लेट्स हैव अ लुक एट द ऑस्ट्रेलियन लाइनअप ऑन आवर स्क्रीन्स। It's Travis Head, one of the most experienced batsmen, and then you've got Matthew Short. Steven said captain करेंगे इस साइड को, उसके साथ then you have Marnus Labuschagne and Alex Carey will be the wicket keeper, although Josh Ingles भी इस playing 11 का हिस्सा हैं, दोनों keepers इस playing 11 का हिस्सा हैं। कुछ हमें राशिद और मोइन की याद आ गई from the Pakistan times, 90s. Glenn Maxwell, Mr. Dependable, the all-rounder, Nathan Ellis, and then you've got Ben Duershers and Adam Zampa and Spencer Johnson. कैसे देखते हैं खालिद भाई इस डिसीजन को of Stephen Smith? आई थिंक वही हॉर्सेस फॉर कोर्सेज उन्होंने रखा है कि कैरी और उनके जो दूसरे हैं दोनों दे प्रॉब्ली नीड देम, बिकॉज देखो ये जो मैच होगा इसमें कौन पहले ब्लिंक करता है वाला सीन होगा इनका, बिकॉज इट विल बी दोनों की बैटिंग जो डेप्थ देखेंगे ना वो काफ़ी बड़ी है। विकेट जो है फ्लैटिश है तो रन्स बनेंगे, और जितनी अच्छी बैटिंग डेप्थ होगी उतनी ही ज़्यादा, क्योंकि देखो मुश्किल है कि 250-260 वाला मैच हो ये। दिस विल प्रॉब्ली 300+ चेज होगा। ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रहा है तो इंग्लैंड के पास भी बैटिंग की डेप्थ अच्छी है, तो आई वुड से कि, और मैं बड़ा वो हूँ, अभी मैं बड़ा अम्यूज़ हो रहा था जब उनकी मैं लाइनअप देख रहा था। स्टीव स्मिथ जो है उनकी 3rd चॉइस कैप्टन है। सोचे स्टीवन स्मिथ जैसा प्लेयर, कैलिबर का प्लेयर जिसकी इतनी कैप्टनसी के रिकॉर्ड भी है और वो भी है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की जो डेप्थ है क्रिकेट में दैट्स अमेजिंग। उनके बहुत सारे टॉप टियर प्लेयर्स नहीं खेल रहे, पूरा उनका जो पेस अटैक है तीनों का ट्रियो जो है कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड नहीं है। उसके बावजूद आप देखें स्पेंसर वगैरह, दे आर स्टिल वेरी गुड विकेट टेकिंग बॉलर्स
तो आई वुड से कि वॉट एवर स्क्वाड दे प्ले, जो 15 लोग लाएँ उसमें से जिस लाइनअप को ये खिलाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप जो है अच्छी होगी, एग्जीक्यूशन उस दिन की कैसी होती है ऑन द पर्टिकुलर डे एंड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर अटैक ऑन अ पर्टिकुलर विकेट विल डिसाइड उनका कि फेट क्या होगा। बिल्कुल, चलते हैं। लेट्स नाउ क्रॉस ओवर टू Alan भाई, हाउ डू यू सी दिस डिसीजन बाय स्टीवन स्मिथ to when he won the toss and decided to bowl first? And also we'd like to know your comments about Stephen Smith being given the captaincy. He's coming back into this role after quite some time, and of course there's also a lot of talk about Australia missing their top players as well in this tournament. Yes, Khaled makes a good point. Steve Smith is very experienced. I see him as a problem solver, Steve Smith. He's got the experience now. He's a prolific run scorer. He captains Washington Freedom in the Major League Cricket, so he's got that experience. And when you look at this lineup, who else would you have as a captain of Australia? No one really leaps out of the page. Maybe Glenn Maxwell, but I think Glenn Maxwell likes to be captained rather than be captain. So I think Steve Smith is the perfect choice as captain here. And I'm looking at this side. It picks itself. The pitch looks an absolute belter. I just caught Simon Doole's comment. He did the pitch report, and he said it looks absolutely perfect. He's called it a batter's day. So I think that there's also a lack of a dew factor. There's no real dew factor in Lahore. It's slightly cooler, I think, than it has been elsewhere in Pakistan. But this is a very good side. It's you've got 4 spin options for Australia. You got Marnus Labuschagne, Glenn Maxwell, Ben Dwarsais and Adam Zampa. And I think that gives them a little bit of an edge. And you make the point as well, Altamish, that yes, there's no Mitchell Starc and there's no Josh Hazlewood, there's no Pat Cummins. But the boys who've come in, the Nathan Ellis's and Spencer Johnsons, they're hungry. They're hungry to perform for Australia. I'm not saying that England are not hungry, but the Australians have got that hunger. And when they see an England shirt, it's like red rag to a bull. They just want to knock and put England in their place. And the narrative, Alan, has always been that despite the fact that even if the Australians aren't at full strength, you can never count them out. And the teams are still always fearing them. Absolutely. You know, there's intense competition in the Australian domestic tournaments. Probably more intense than it is in England. That's for another conversation. But you know, you want to play for your country. I'm not saying that England players don't want to play. Of course they do. But you know, these are homegrown Australians. Now, you know, you might say, is Jofra Archer a homegrown Englishman? No, he's not. He learned his cricket in Barbados. And you know, again, he's a cricketer who's had a lot of injuries, so he's come into this team today, and so has Mark Wood. Absolutely a career where he's bowled spellbindingly fast, and yet he's also broken down. So I think there's a brittle edge to the England side, where I think there is a robustness, a robust nature to this Australian team. Absolutely. अपना थोड़ा सा आपके पास मैं आता हूँ खालिद भाई, जिन्होंने बात की बड़ी अच्छी, स्टीवन स्मिथ का बड़ा इन्होंने अच्छा डिस्क्राइब कर दिया, और इस तरह से जो ऑस्ट्रेलियन साइड भी जो है अगेन जितना ये ईगर है, ये लोग परफॉर्म करना चाहेंगे यहाँ पे, लेकिन अब इंग्लैंड बैट कर रहा है। एक जो जॉस बटलर ने एक बात की थी कि PSL का एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करेगा इसके अंदर, जो इंग्लिश प्लेयर्स यहाँ पे खेलते आए वो कितना इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच में, गिवन द कंडीशन से बड़ा जो है फेमिलियर होंगे। ऑब्वियसली इट मैटर्स अ लॉट, स्पेशली जब इंग्लैंड से अगर आ रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की विकेट्स में पहले नहीं खेला हुआ, तो थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। बट जैसे बेन डकेट है, फिल सॉल्ट है, लिविंगस्टन है, यू नो 3-4 प्लेयर्स हैं जो बहुत रेगुलरली PSL खेल रहे हैं। अभी रिसेंटली जो लास्ट हमारी एडिशन हुआ था, रिसेंटली तो नहीं लास्ट ईयर, बट उसमें भी खेला उन्होंने। देन इंग्लैंड के जो हैरी ब्रुक वगैरह हैं वो टेस्ट टूर के लिए भी आए थे, तो इट मैटर्स अ लॉट, बहुत होता है। लेकिन मैं एलन की एक बात पे वो ज़रूर करूँगा, जो ऑस्ट्रेलिया के नेचर पे है। देखो ऑस्ट्रेलियंस समहाउ हम बचपन से देख रहे हैं, दे आर लाइक फियर्सली कम्पिटिटिव, मतलब क्रिकेट में इतना फियर्सली कम्पिटिटिव अगर कोई टीम मैंने देखी है वो ऑस्ट्रेलिया देखी है। जितनी भी डाउन होगी, उनके कितने भी प्लेयर्स आउट हो, वो कोशिश ये करेंगे कि वो अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दें,
मैच सिर्फ जीते नहीं, बड़े बड़े मार्जिन से जीते हैं। तो जो उनके अंदर वो वाली जो फियर्स नेचर है ना मैच जीतने की, वो ऑब्वियसली इंग्लैंड उससे कम्पीट करना इंग्लैंड के लिए मुश्किल है, बिकॉज इंग्लैंड कंपैरेटिवली, आई वोंट से कि इंग्लैंड कंपेटिटिव नहीं है, बट उतना फियर्सली कंपेटिटिव नहीं है जितने ऑस्ट्रेलियंस हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे जो लग रहा है टॉस के बारे में कि उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। पिछले 2 मैचेस श्रीलंका में खेले, वो 200 रन तक भी नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि एक अच्छी बैटिंग ट्रैक है, जैसे ब्यालन ने भी बात कही, हमने पिच रिपोर्ट में भी देखा साइमन डूल की, ये अपना आपको बैक कर रहे होंगे कि इनको जितने कम रन पे आउट करके फिर उसको चेस करने की कोशिश करें। आई थिंक कि इस विकेट पे ये बहुत कॉन्फिडेंट होंगे कि बड़ा भी टोटल हो गया, लाइक बड़ा इन द सेंस कि 300 से बहुत ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा है, लेकिन 300 तक अगर टोटल हो गया तो इनकी देखो ना बैटिंग लाइनअप इनकी भी बहुत डीप है, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की भी डीप है, बट ऑस्ट्रेलिया की बहुत डीप बैटिंग लाइनअप है। मैक्सवेल वगैरह मैच टर्न करने में बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं, लाइक आखिरी अगर 10 ओवर में 120 रन भी चाहिए तो दे हैव द फायर पावर टू डू इट। तो आई एम श्योर कि दे आर कॉन्फिडेंट कि ये 300 वाला टोटल चेज कर लेंगे। बिल्कुल। एक गद्दाफी का अगर हम एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर देखते हैं, दैट्स 291 runs. Alan, as I was asking Khalid regarding the experience the English players have in Pakistani conditions, how much of an advantage would they be at in this match today? They are batting first, and we just saw the average first inning score as well at the Gaddafi in 1 day. That's 291. Yes, well, they've got that experience, and it's recent experience. They've played ODIs, they've played T20s, and they've played thrilling Test cricket. Some of the best Test matches in recent history have been played in Pakistan. 291 average first innings score. That's a heck of a total. England, you mentioned there, and Khalid did as well. Livingston's batting at 7, and Bryden Cars can bat as well. But there's a very strong England batting lineup, but they haven't been performing recently. Someone has got to play the long innings. I'm just wondering if they are going to go in with Smith at 3, or whether they will, because they're batting first and because they need someone to play the long innings. Someone's got to get a big 100 for England today. Could it be Smith? Could it be, could it be Root? Could it be Brook? I'm just wondering whether they'll still go with Smith at 3. Salt, Duckett, they all play the way that we know. It's crash, bang, wallop over the park, like Travis Head does for Australia. But it needs a considered approach from one of these senior England players today. And I think Joe Root is the key man for England today. And we're looking at Josh Butler as well. You mentioned Joe Root, but we've got some stats for Josh Butler at the moment, if you can have a look at them on a screen right now. Josh Butler is averaging just 20.78 in his last 15 ODIs with 250s, captaining the side as well. Alan, definitely he would be wanting to get some runs and leading the side from the front. He is a phenomenal player, Altamish. Josh Butler is an outstanding player, but those numbers tell the story. He has not played, he missed every ODI last year. In 2024, he didn't play for England in a one-day international. He had a persistent calf injury, but we know how prolific he has been in the various T20 leagues as a T20 player. And at the start of this show, we talked about England transferring their skills to playing with a different mindset to 50 over. Now, can Josh Butler do that? I'm sure he can. He's going in at 6. It's quite low down the order, which if the top order has done its job, then maybe Josh Butler can adapt his T20 mindset if there are fewer overs remaining. But if there are early wickets, then there's pressure on that middle order. There's pressure on Harry Brook going in at 5. There's pressure on Josh Butler. So it's all very well. This is this question again, Altamish, and Khalid will allude to it as well. Baz ball is all very well, and you get off to a flying start. But if you're 25 for 3 or 40 for 4, then you've got some work to do, and it's tough. And it's not a T20 where you've got 6 overs left. You've got 50 overs to bat. So there are question marks about this England batting today, and Josh Butler in particular, which is why I really believe that Joe Root is the key for England. Joe Root, the key for England, as Alan has said. Not just the match between these two will be interesting, but the style in which the way England is going to play and approach this match will be very interesting to see as well. Well, we have to go for a short break. When we come back, just a few questions from our viewers for our experts in
who have joined us on today's program, and then we'll go straight towards the match. You're watching Sunsilk Presents Nukta Pitchside, powered by Skechers. क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। And Harry Kane scores another goal. Is there anything Harry can't do since switching to new Skechers football boots? Checkmate. Incredible! That's impressive. This guy can do anything in Skechers. New Skechers football. It's comfort that performs. बचपन से कारोबार का शौक। स्पोर्टर की उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। 2020 में इंटरलूप ने 33 बिलियन रुपीस की एक्सपोर्ट्स की। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। Introducing Skechers Pickleball. They're ultra lightweight and responsive for incredible speed. They have Goodyear rubber outsoles with a specialized pickleball design for increased side-to-side stability and agility. Conquer the court in comfort. Skechers Pickleball, the official footwear of every pickleball league. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सबसे थोड़ी रिकवरी नजर आई और जनवरी 2025 में रेमिटेंसेस $3 बिलियन रही। Liquidity, obviously that doesn't come in immediately. और अब इस हफ्ते के टॉप 5 गेनर्स। पॉलिसी रेट हायर है 15% पे। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम with Sunsilk Black Shine. You're seeing Skechers' famous glide step footwear everywhere. And now that famous design is available in hands-free Skechers slip-ins. Get the comfort and style of glide step now with the convenience of slip-ins with no bending down or touching your shoes. Try glide step Skechers slip-ins. क्या करना है to make your money work for you? बचपन से कारोबार का शौक। स्पोर्टर की उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। 2020 में इंटरलूप ने 33 बिलियन रुपीस की एक्सपोर्ट्स की। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। Get the whole story. Nukta, the whole story. Download the app now. And Harry Kane scores another goal. Is there anything Harry can't do since switching to new Skechers football boots? Checkmate. Incredible!
That's impressive. This guy can do anything in Skechers. New Skechers Football. It's comfort that performs. क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। ब्रेक के बाद खुशामदीद, you're watching Sunsilk presents Nukta Pitchside powered by Skechers। अब सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं for the 4th match to start between England and Australia in the ICC Champions Trophy। और क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया हमारे अब शो में तो हम क्विक प्रेडिक्शंस लेंगे एंड प्लेयर ऑफ द मैच। खालिद भाई का अगर हम टैली देखते हैं तो उनका एक प्रेडिक्शन सही थी, एक गलत निकली है। खालिद भाई क्या कह रहे हैं, कौन सी टीम को पिक कर रहे हैं और कौन से प्लेयर पे आपकी नजर है? I will pick Australia and Travis Head। उसकी तुम परफॉर्मेंस देखो, अगर लिमिटेड ओवर्स में बहुत अच्छी रही है। ही हैज़ द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट पावर प्ले में सिंस 2023। यू नो जो लास्ट उनकी सीरीज हुई थी, he has the highest strike rate, बिल्कुल 129 in power play since 23। एंड देन जो लास्ट सीरीज हुई थी दे बीट इंग्लैंड इन इंग्लैंड, उसमें भी ही वाज द प्लेयर ऑफ द सीरीज। सो ही इज़ बीन डूइंग रियली वेल। यू नो चौके छक्के मारने के एक्सपर्ट है। एक उनकी वीकनेस है जो आई एम श्योर उनको पता होगी, इंग्लैंड को शॉर्ट बॉल है। तो अगर इस विकेट पे अगर शॉर्ट बॉल वो कर सकेंगे इतनी पेस के साथ कि उसको बीट कर सकेंगे तो वो चांस है। अदरवाइज आई थिंक ट्रेविस हेड विल बी द मैन ऑफ द मैच। He's averaging 55.87 in the recent past, especially versus England as well. Alan, it's been an absolute pleasure speaking to you this morning. Because we have very little time, so we'll quickly ask you for your prediction for today's match. And which player would you be picking? I know you've mentioned Joe Root already, but if that's your player or someone else? I appreciate what Khalid said. Let me correct what I said a little earlier. Dwarce's is left arm pace, not left arm spin. Yeah. But the 3 seam bowlers for Australia, Dwarce's, Ellis and Spencer Johnson, have only played 14 ODIs between them, which I think puts pressure on Australia. And because Khalid has gone for Australia, I'm thinking England to win, Joe Root, big 100. Excellent. In the post-match, I'll hold both of you accountable and let's see who wins. Alan, thank you so much for joining us. And Khalid, आपका बहुत शुक्रिया. Thank you, Alan. Great stuff. And आपको हम मिलेंगे अब post-match analysis में after the match. Enjoy the match. And like I always say, between the match, if you want any news updates, fixed on your current affairs, do watch the Nukta platforms. You've been watching Sunsilk presents Nukta Pitchside, powered by Skechers. It's goodbye for now.